Hare Krishna. Welcome to our ISKCON Punjabi Bhag YouTube channel. The purpose of ISKCON Punjabi YouTube channel is to bring in front of you daily the beautiful darshan of the Lord. Melodious kirtans, Daily discourses, daily guidance, upcoming new festivals, and much more. So therefore, please stay connected with us. For that, you have to click the subscribe button And press bell icon. Thank you. Hare Krishna. Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayam Udirayat. I'm not sure what the verse is on the board. 17? 14 is on the list. Yo samanjasa ityukta. This is not the 17. I'm sorry. Evam vrita paryukta prayatyakta pitrasneham upohyavai yogeshwarena balam stan darshayitva tato yayam evam vrita prayatyakta pitrasneham apohyavai yogaishwarena bhalam stan darshayitva tato yayam evam vritta prayatyakta Vaishnavis.
जय। एवं वृत्ता इस प्रकार ग्रहित कार्यों में व्यस्त परित्यक्ता निकाला हुआ पिता द्वारा स्नेह अपोह्य त्याग कर वै निसंदेह योग ऐश्वर्येण योग शक्ति से उन बालकों को जो जल में गिराए गए थे और मारे गए थे दर्शित्वा उनके माता पिता को फिर से दिखलाकर तथा उस स्थान से चला गया। अनुवाद। चूंकि असमंजस ऐसे गहरे कार्यों में लगा रहता था, अतः उसके पिता ने उससे स्नेह करना छोड़ दिया और उसे घर से निकाल दिया। तब असमंजस ने उन बालकों को जीवित करके उन्हें राजा तथा उनके माता पिताओं को दिखलाकर अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। तत्पश्चात असमंजस ने अयोध्या छोड़ दिया। तात्पर्य। असमंजस जाति स्मर था, उसे अपनी योग शक्ति से अपनी पूर्व चेतना भूली नहीं थी, अतः वह वृत्त को जिला सकता था। वृत्त बालकों के प्रति अद्भुत कृत्य करके उसने निश्चय ही राजा तथा जनता का ध्यान आकृष्ट किया और फिर तुरंत उस स्थान को छोड़कर चला गया। Can you read the previous verses? श्लोक संख्या 14 का अनुवाद। महाराज सगर के पुत्रों में एक का नाम असमंजस था, जो राजा की दूसरी पत्नी केशरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। असमंजस का पुत्र अंशुमान था और वह अपने बाबा सगर महाराज के कल्याण कार्य में सदैव लगा रहता था। असमंजस पिछले जन्म में एक महान योगी था, किंतु कुसंगति के कारण वह अपने उच्च पद से नीचे गिर गया था। अब इस जन्म में वह राज परिवार में उत्पन्न हुआ था और जाति स्मर था, अर्थात वह अपने पूर्व जन्म को स्मरण करने में समर्थ था। फिर भी वह अपने आप को दुर्जन के रूप में दिखलाना चाहता था, अतः वह ऐसा कार्य किया करता था जो जनता तथा उसके परिजनों की दृष्टि में गधित तथा प्रतिकूल होता। वह सरयू नदी में खेल करते बालकों को गहरे जल में फेंक कर उन्हें तंग करता रहता था। और फिर आज का श्लोक है। चूंकि असमंजस ऐसे घृणित कार्यों में लगा रहता था, अतः उसके पिता ने उसे स्नेह करना छोड़ दिया और उसे घर से निकाल दिया। तब असमंजस ने उन बालकों को जीवित करके उन्हें राजा तथा उनके माता पिताओं को दिखलाकर अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। तत्पश्चात असमंजस ने अयोध्या छोड़ दिया। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाच देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। So it's mentioned here, Jati Smaran. This isn't an unusual thing. There is a professor at the University of Virginia, Ian Stevenson, correct, who has accumulated 4,000 documented cases of this. Particularly, this occurs in young children. One case in particular stands out. Oh, I'm sorry. तो जाति स्मरण यहाँ पर शब्द आया है, ये बहुत ही असाधारण शब्द है। इसका अर्थ है जिनको पिछले जन्म में याद रहता है। एक प्रोफेसर है इयान स्टीवेंसन, जिन्होंने 4000 ऐसे केसेस को लिखा है, नोट किया है। So one case in particular stood out in my mind.
There was one young boy who said, I was murdered in my last life. I know who the murderer is, I know where he buried my body, and I know where the murder weapon is. Where the murder weapon is. So the police were informed. And they thought, who is this crazy boy? But when they went to the site, they found a dead body buried underneath the ground. With severe trauma to his head. And then when they went to the place to find the murder weapon, they found one hatchet buried in the ground. And when they confronted the accused, he was so shocked that he admitted to the crime. So there are 4,000 cases like this on file, and this is this person's, he's a PhD professor. He also received our Coming Back book. I heard of him and I got his address and sent him Coming Back. So ऐसे 4,000 cases इन प्रोफेसर के द्वारा लिखे गए हैं और उनको पुनर्जन्म Coming Back जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तक है वो भी उनको भेंट दी गई. And he appreciated the book. He sent a letter back of appreciation. और उन्होंने पुस्तक पढ़ के इसको बहुत प्रशंसा की और उन्होंने एक प्रशंसा पत्र वापस भक्तों को लिखा. So foolish people who have brains like a donkey think that reincarnation is just a religious belief. तो मूर्ख लोग जिनका दिमाग एक गधे के समान है उन्हें लगता है कि पुनर्जन्म सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है. Who have brains like a donkey. जिनका दिमाग गधे जैसा है. They think there's no past life. This is all there is. Just one life. There's nothing more than this. उन्हें लगता है कि जीवन नहीं होता. उन्हें लगता है कि यही एकमात्र जीवन है. But if you ask them, please explain to me, how is it we see so much variety in human society? They have no answer. परंतु अगर हम उनसे पूछें कि आप हमें समझा सकते हैं कि इस जीवन में हमें इतनी विभिन्नताएं क्यों प्राप्त होती हैं, तो इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं. Why is one man an Ambani and another man is lying in the street with no job and no food? तो एक व्यक्ति बहुत ही अमीर घर में है, बहुत ही अमीर, और दूसरा जो व्यक्ति है वो सड़क पर पड़ा हुआ है बिना किसी खाने के. Why is one man crippled and one man an athlete? One man a genius and one man a fool? तो एक व्यक्ति अपाहिज क्यों है और दूसरा व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ. एक व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान है और दूसरा मूर्ख. They have no answer for this. तो उनके पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं. Is God playing favorites? That He's going to bless one person arbitrarily and another person He decides to curse? क्या भगवान इस प्रकार से भेदभाव करते हैं कि एक व्यक्ति को पूरा आशीर्वाद देते हैं और दूसरे व्यक्ति को शाप देते हैं? We read in Bhagavad-gita, Samoham sarvabhuteshu nabhidveshtosti napriya, that Krishna is equal to everyone. श्रीमद् भगवद-गीता में हम पढ़ते हैं कि कृष्ण सबके प्रति समान है. And whatever people experience in this world is a product of their own making. और जो भी इस प्रकार का भेदभाव लोग अनुभव करते हैं वो उनकी मानसिक कल्पना के अनुसार लिखा है. But when something goes well for a person, they think, I'm very clever. And if there's some disaster in their life, they ask, why is God doing this to me? वो अगर जीवन में सफल होते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, इसलिए मुझे सफलता प्राप्त हुई. अगर कुछ विकल्प परिस्थितियां आ जाए तो वो भगवान के ऊपर प्रश्न पूछते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. This is all due to ignorance. तो ये अज्ञानतावश है. Because we've had many millions of lives. क्योंकि हमारे पास लाखों जन्म हो चुके हैं. Chaitanya Charitamrita says, Brahmanda Brahmite Konya Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Latabish. We've been wandering life after life through many Brahmandas doing the same thing over and over again. तो
तो चरित्रामृत में बताते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जीवन परंतर जीवन हम एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं. So there's proof, this is proof positive, aside from any religious tradition, that we've had many lives in the past. तो ये प्रमाण साबित करता है कि पुनर्कृष्ण जन्म भी था और अगला जन्म भी होता है. And we have one story also in the context of our own society that I heard. और हमारे समाज के संदर्भ में भी हमारे पास इस प्रकार की एक कथा है. There was a young boy in our Mayapur Gurukula that was experiencing extreme asthma attacks. तो गुरुकुल में एक बालक था जो उसको अलग-अलग प्रकार के अटैक्स आते थे. And they tried Ayurvedic medicine, homeopathic, allopathic, naturopathic medicine, nothing worked. उन्होंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथिक हर प्रकार की दवा प्रयास कर लिया था उसको लगाने का, कोई दवा काम नहीं कर रही. So they took the boy to a person who does past life regression. तो वो एक ऐसे व्यक्ति के पास उनको ले गए जो past life regression करता था. Under hypnotic trance. लोगों को hypnotism के माध्यम से. So under hypnosis, the person asked him, "Who are you and what are you experiencing?" And he said, "I'm a soldier on the battlefield and I have a spear stuck in my chest and I can't remove it and I'm dying." तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या अनुभव कर रहे हो. तो उन्होंने कहा कि मैं एक सैनिक हूँ और मेरे पीछे एक हथियार भोग दिया गया है और मैं उसको निकाल नहीं पा रहा. And this was the source of his asthmatic attack, this traumatic experience of having a spear stuck in his lungs. तो ये उसके भयावह अनुभव जो बार-बार अटैक आ रहे थे उसका कारण था कि उसको ऐसा अंदर से महसूस हो रहा था कि हथियार उसके शरीर में घुसा हुआ है और उसको निकाल नहीं पा रहा. So the person died on the battlefield and took birth again as a young girl in New York City. तो वो योद्धा मारा गया, उसकी मृत्यु हो गई युद्ध भूमि पर और न्यूयॉर्क शहर में एक बालिका के रूप में उसने जन्म लिया. And the person asked her, "What do you see now?" और जो उस व्यक्ति ने पूछा, "अब तुम्हें क्या दिख रहा है?" Said, "I see A.C. Bhaktivedanta Swami and several of his disciples, and I'm very attracted. I wish I could become one of them." तो उन्होंने कहा कि मैं A.C. भक्तिवेदांत स्वामी को देख रहा हूँ और उनके कई शिष्यों को देख रहा हूँ और मैं उनसे बहुत आकर्षित हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उनमें से एक बन जाऊँ. The girl died prematurely and took birth in a family in Mayapur and joined our ISKCON Gurukula. तो वो उनकी अकाल मृत्यु हो गई, उनका पुनर्जन्म हुआ मायापुर में और मायापुर में गुरुकुल में उन्होंने भर्ती हुए. But just such a slight connection with Srila Prabhupada, just seeing him and thinking, I would like to be with these people so much. तो एक छोटा सा संबंध भी श्रीला प्रभुपाद के साथ, सिर्फ उन्होंने उनको देखा मात्र, उससे उनका तालाब. This brings to mind two other stories of how a slight connection with Srila Prabhupada, by a slight connection with Srila Prabhupada, the person reaped tremendous benefit. तो ये मेरे मन में दो ऐसे घटनाएं और आ रही हैं कि श्रीला प्रभुपाद के साथ बिल्कुल हल्का सा संबंध था, फिर भी इतना भारी मात्रा में उनको लाभ पहुंचा. Srila Prabhupada was traveling on the plane with his disciple servant Shruti Kirti Prabhu. श्रीला प्रभुपाद एक प्लेन में यात्रा कर रहे थे अपने शिष्य श्रुति कीर्ति प्रभु के साथ. And Srila Prabhupada was eating his lunch, some muri. श्रीला प्रभुपाद भोजन ले रहे थे, उसके पास पेट में मूढ़ी था. So the airline stewardess came by and she just took some and put it in her mouth. तो वहाँ पे जो एयर होस्टेस है वो आई, श्रीला प्रभुपाद की प्लेट से वो मूढ़ी उठाई और अपने मुंह में डाली. This looks good, and just took some. और उसने कहा ये खाने में स्वाद में अच्छा लगता है. And Prabhupada didn't mind. He was very friendly towards her and asked, "Can you bring us some milk, some hot milk and some fruit?" And she complied and served Srila Prabhupada and the devotees. तो श्रीला प्रभुपाद ने इसका विरोध नहीं किया, वो उनके प्रति बहुत मैत्रीय भाव था. उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप मेरे लिए गर्म दूध और कुछ ड्राई फ्रूट ला सकते हैं और उन्होंने वो उनकी इस प्रकार से सेवा की. So fast forward 20 years. तो 20 साल आगे चलते हैं. And devotees going door to door
in some South American country, knocking on doors, trying to distribute books. तो दक्षिण अमेरिका देश में एक भक्त घर-घर जाकर उसका वितरण कर रहा है. So he knocks on one door, a lady comes to the door. तो एक दरवाजे पे वो खटखटाता है, उसका दरवाजा खुलता है तो एक महिला बाहर आती है. She's wearing a sari and has tilak. उन्होंने साड़ी पहनी हुई है और तिलक लगाया हुआ है. And invites him in. उनको वो अंदर निमंत्रण देती है. She has an altar with Gauranitai deities and all of Srila Prabhupada's books. उनका एक ऑल्टर था, उस पे गौरनिताई के विग्रह थे और श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें थी. Who is that person? The same lady who took prasadam off Prabhupada's plate. तो कौन सी महिला थी? वही महिला थी जिन्होंने श्रील प्रभुपाद की प्लेट से प्रसाद किया था. Because in the course of conversation she came to understand that he's an author, so she looked up his books and started ordering things online and became devotee. Even without connection with any temple, she became devotee. क्योंकि तो उनकी वार्तालाप हुई थी तो समझ गए थे कि ये एक लेखक है, तो उन्होंने बाद में उनकी पुस्तकें ऑर्डर की और पुस्तकें पढ़ने मात्र से वो भक्त बन गए. हालांकि उनका किसी भी भक्त के साथ कोई संबंध नहीं था. There's another time a young lady was walking with her mother, a child was walking with her mother on the streets of New York City. तो न्यूयॉर्क शहर में एक बार एक छोटा बच्चा अपनी माता के साथ जा रहा था. And Srila Prabhupada was walking morning walk with his disciples. और श्रील प्रभुपाद सुबह की सैर पर अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे. And Srila Prabhupada's beads were hanging out of his bead bag, as sometimes our beads will hang out. He's chanting, but the beads are hanging out from the side of the bead bag. तो श्रील प्रभुपाद जब जप कर रहे थे तो जपमाला का जो बैग है उसमें हल्के साइड से वो बीड्स नीचे की ओर निकल रहे थे, जैसा अक्सर कभी बार देखा जाता है. So this little girl spontaneously walks up and puts Prabhupada's beads back in his bead bag. तो ये जो छोटी लड़की थी वो ऐसा देखकर पास में गई श्रील प्रभुपाद के और जो बीड्स निकल रही थी बीड बैग से उसको उठा के बीड बैग के अंदर डाल दिया. So again, fast forward 15-20 years. तो 15-20 साल बाद फिर गए. And one of our sannyasis is telling this story in one Bhakti Viksha group. तो एक सन्यासी भक्ति विक्षय ग्रुप में कहानी बता रहे थे. There's one lady in the group, initiated devotee, tilak, sari, says, that was me. तो वहाँ पर एक महिला थी, तेरा कराया वाला साड़ी बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा वो मैं थी. So can we imagine the benefit we will receive by spending a lifetime serving Srila Prabhupada? We can't imagine. तो क्या हम अनुमान अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितना लाभ प्राप्त होगा जब हम पूरा जीवन भर उनकी सेवा कर रहे हैं? So only foolish people think that there is no previous life and there will not be a life after this. तो सिर्फ मूर्ख व्यक्ति ही इस प्रकार सोचते हैं कि पिछला जन्म कुछ नहीं होता या अगला जन्म कुछ नहीं है. But this is a very predominant philosophy, so-called philosophy in Kali Yuga. तो कलयुग में ऐसे दर्शन का बहुत प्रभाव है, तथाकथित दर्शन. So we have lots and lots of work to do to counteract this negative idea. तो इस नकारात्मक विचारधारा का विरोध करने के लिए हमारे पास बहुत सारा कार्य शेष है. That God is some kind of cruel, vindictive taskmaster that only gives you one chance to become perfect in spiritual life. कि भगवान एक क्रूर ऐसे व्यक्ति के समान है जो सभी लोगों से काम कराते हैं और उन्होंने हम सबको सिर्फ और सिर्फ एक ही अवसर दिया है. We have as many chances as you want. He says, Yaya tamam prapadyante tam stataiva bhajamyaham. Take as much time as you want. Come back as much as you want. But as you surrender to me, I reward you accordingly. भगवान कहते हैं ये तमाम प्रपद्यन्ते कि जिस प्रकार से तुम चाहते हो उस प्रकार से मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ. Because if they say that we only have one chance, doesn't that mean God's a very cruel person? Even a man of this world can give a person a dozen chances. You do something wrong, okay, I forgive you, I forgive you, I forgive you. But God can only forgive our mistake once, only one lifetime to become perfect in self-realization. लोग कहते हैं कि भगवान एक बहुत क्रूर व्यक्ति है जिन्होंने हमें सिर्फ एक ही अवसर दिया है, एक ही जीवन दिया है. परंतु हम देखते हैं इस साधारण जगत के व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को 10-12 बार माफ कर देता है. तो क्या भगवान ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने हमें सिर्फ एक ही अवसर दिया है? So this is a stupid idea that we need to counteract by our preaching and book distribution. तो ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण विचारधारा है जिसका हमें भरसक विरोध करना चाहिए. To present Krishna, the most merciful, kind, magnificent, magnificent, beautiful person, and who is available to us by chanting His holy name. तो भगवान कृष्ण को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जो
कन्याएं हैं, करुणा से ओतप्रोत हैं और बहुत ही सुंदर दर्शन है. In other religions, they paint this picture of God as a very cruel, vindictive person who really wants to send you to hell and make you suffer for the slightest offense. तो एक अन्य जो दर्शन है इस प्रकार से कहते हैं कि जो भगवान बहुत ही क्रूर व्यक्ति हैं और उनसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए उसके बदले तुम्हें नरक में भेजना चाहते हैं. But we are worshippers of Krishna who delivered Putana back to Vaikuntha. परंतु हम उन भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं जिन्होंने पूतना का उद्धार किया. Putana came to kill Krishna. पूतना कृष्ण का वध करने के लिए आई थी. But because she offered her breast to the Lord, Krishna took it, oh, she's like my own mother. परंतु क्योंकि उन्होंने उनको स्तनपान कराया तो भगवान कृष्ण ने उनको अपनी मां के रूप में स्वीकार किया. Never mind, she tried to kill me. She's like my mother. Okay, let her have liberation. Let her go back to Vaikuntha. इस बात की परवाह नहीं कि उन्होंने मुझे मारने का प्रयास किया. उन्होंने उनको माता के रूप में स्वीकार किया और उनको वैकुंठ में स्थान मिला. So who can be more kind than Krishna? Supremely kind. भगवान कृष्ण से ज़्यादा करुणा कौन दिखा सकता है? He's not. He wants us to come to him. He doesn't. It pains him to see persons averse to him and suffering in hell. तो वो चाहते हैं कि हम सब उनके पास आएं और उनको बहुत दर्द का अनुभव होता है जब वो देखते हैं जीवात्माएं उनसे विमुक्त हो चुकी हैं. So he extends himself to the conditioned souls in so many ways to deliver them. तो वो अलग-अलग तरीकों से अपने आप को विस्तारित करते हैं और प्रयास करते हैं कि जिससे बाद आत्माओं का उद्धार हो सके. We say every morning, Nam Namakari Bahuda Nijya Sarva Shaktis Tatarapita Niyamita Smaranena Kalaha Itadashi Tavakripa Bhagavan Mamapi Durdaivam Iddishami Hajani Nanaragaha. That Krishna is so kind. He's invested all his power, all his beauty, all his love, all his compassion, all his qualities, Nijya Sarva Shaktis, in his holy name. भगवान कृष्ण के कृपालु है, इतना करुणामय है कि उन्होंने अपनी सारी की सारी शक्ति अपने नाम में अर्पित कर दी है. He's made himself easily available in the form of his name. और अपने नाम के रूप में उन्होंने अपने आप को कितने आसानी से उपलब्ध करवा दिया है. But Durdaiva Middishami Hajani Nanaragaha, we're so unfortunate. Although Krishna's made himself so easily available, we're not very interested. We have no rati, no feeling for him. परंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि हालांकि भगवान कृष्ण ने अपने आप को इतनी सरलता से उपलब्ध कराया है, मेरे नामों को लेने में कोई रुचि नहीं है. So what is the solution to not having attraction to the holy name? इस समस्या का क्या समाधान है कि भगवान कृष्ण के नामों के प्रति कोई आकर्षण ना हो? Only chanting the holy name. सिर्फ जप करने के माध्यम से. Shastra says, Nama Parada Yuktanam Namanyeva Harantigam Avishranti Prayuktani something Koranicha. That by chanting the holy name we become free from our offenses to the holy name. भगवान के पवित्र नामों का जप करने से ही भगवान के नाम में होने वाले अपराधों से हम मुक्त होते हैं. All of the offenses we make to the holy name are mitigated by chanting the holy name except one, Vaishnava Purana. तो भगवान के नाम अपराध सभी प्रकार के नाम अपराध एक को छोड़कर भगवान का नाम जप करने से क्षमा हो जाते हैं. If you offend a devotee, you have to approach that devotee to become free from the offense. You just अपराध कौन सा है? वैष्णव अपराध. अगर वैष्णव अपराध किया है तो उस वैष्णव के पास जाके उनसे क्षमा मांगे. Other offenses are mitigated simply by the chanting of the holy name. बाकी सभी प्रकार के अपराध भगवान का पवित्र नाम उच्चारण करने से मुक्त हो सकते हैं. So Krishna extends himself in the form of his holy name. He comes personally as the deity. Pratima nahi tumi sakshat brajandanandana. This Krishna walks, he talks, he steals for his devotee. तो भगवान कृष्ण अपने नाम में अपने आप को उपलब्ध कराते हैं और साथ ही साथ अर्चविग्रह के रूप में आते हैं. वो बात करते हैं, चलते हैं, सेवा स्वीकार करते हैं. And he comes as Krishna Prasadam. और वो कृष्ण प्रसाद के रूप में आते हैं. There was one professor एक प्रोफेसर थे who came to see Srila Prabhupada very smartly dressed. श्रील प्रभुपाद को मिलने आए थे और बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेस किया हुआ था. Very expensive 3-piece woolen suit बहुत ही महंगा 3-piece woolen suit पहना हुआ था. with silk tie and patent leather shoes. और सिल्क टाई था और लेदर शूज पहने हुए. So after darshan, Srila और
So Krishna approaches us even in this way. Everyone has to eat. So Krishna is saying, eat prasadam. I'm giving you myself in the form of delicious food also. So I say this, Bhajo Bhajo Bhai Chaitanya Nitai Sujada Vishwasakori. That this process is Kevala Ananda Kanda. It's such an easy thing. We sing, we dance, we take prasadam, we fold our hands before the form of the Lord. Such an easy thing. Krishna approaches us. Just come, have a relationship with me, come back to me. Why rot in the material world? Why take over and over and over birth and death, birth and death, birth and death, birth and death? So to have affection for Krishna, one thing is also required. And Srila Prabhupada mentioned this to his godbrother Odbi Hare Kapoor, who is Srila Prabhupada's lifelong friend. He came to visit him in his pharmacy in Allahabad. So he was joking with Srila Prabhupada, you have so many medicines, so many elixirs, so many syrups here. Do you have some elixir that will give me Krishna prema? Srila Prabhupada said, no, I don't have, but I know the formula. Chanadapi sunichena, tororapi sahishnana, amanina manadena kirtaniya sadahari. To be humble, don't be proud. Be forgiving, don't be vengeful. And then kirtaniya sadahari. Then we can come to the stage of having attraction for chanting Krishna's name. So we see an example of this here in this story. Asamanjana is pretending to be a big demon. He's out drowning little boys. Because he's not wanting people to respect him. We also saw this in the behavior of Srila Gaura Das Babaji Maharaj. That he would sometimes wear the most expensive dhoti. And would wear the most expensive clothes, so people think, what kind of Babaji is this? He's simply a Vishayi. And this way they'd leave him alone and he could chant peacefully. He would live where no one else would go, in a latrine. Where no one would bother him. And he said one time, this is also instructive, to one newly married couple. Who came and said, give us your blessings, Maharaj, please, Ashirvad Karo. He said to the man, yes, I'll give you my blessings, on one condition. That you go to your home and you prepare prasadam. And you take that prasadam, offer it to your wife, and when she's through eating, you eat her remnants. In this way, give up your bogus male enjoying mentality. Then you can have my blessing.
इस प्रकार से जो कृत्रिम रूप से भोगने की भावना है इसको त्याग दो तब तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा. To give up the idea that you're the enjoyer of this woman, then you can have my blessing. इस धारणा को त्यागना कि इस स्त्री का भोक्ता मैं हूँ तब तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा. So these are the activities of persons not of this world. तो ये सारे कार्यकलाप इस संसार में रहने वाले व्यक्ति के नहीं हैं. So Asangjana is shown here to be mystic yogi. He's drowning boys, but he's bringing them back to life also. But after he brought them to life, what did he do? He left that place. Why? Because people think, oh, he's a great mystic yogi. And they'll come to him for all kinds of material benediction. Give me dhanam janam sundarim. Because this is the mentality of a materialistic person. They expect some material blessing from a sadhu. Srila Prabhupada was traveling on the train, and because one of our life members was very highly placed in the Indian railway system, he arranged a very first-class car for Srila Prabhupada. So bhakton ne unke liye bahut hi sundar vyavastha ki thi Srila Prabhupada ji ke liye first class ek bogi ka prabandh kiya tha. And people came to know that we're traveling on the train, that A.C. Bhaktivedanta Swami, the founder Acharya of ISKCON, is traveling on the train. So लोगों को पता चला कि आप इस ट्रेन पर जो ISKCON के संस्थापक आचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद वो भी हैं और उन्हीं के साथ यात्रा कर रहे हैं. And several of these wealthy businessmen came to seek Srila Prabhupada's blessing. So विभिन्न प्रकार के businessmen आए श्रीला प्रभुपाद से आशीर्वाद लेने के लिए. Srila Prabhupada was traveling with several Western sannyasis. So श्रीला प्रभुपाद सन्यासी थे उनके साथ यात्रा कर रहे थे. So when they came, Ashirvad Karo, Swamiji Maharaj, Ashirvad Karo. He pointed to his Western disciples, sannyasis, and said, "This is my blessing. Do you want this blessing?" Nobody wants this blessing. Only the most fortunate person gets this blessing. Any other blessing is just a cheating blessing, kapat blessing. They come to the demigods also for the same thing. They collect one bael leaf, they write Ram, they bring Ganga Jal, they bow down to Lord Shiva, and after this thing, now you please bless me. Dhanam janam sundarim. One great devotee wrote about Lord Shiva's actual blessing. He said, one day, I'm forgetting the verse. This old age thing will also happen to you, trust me. Shrimad Gopishwaram Bande Shankaram Karunamalam. That Vrindaranya Vratipadam. He said that Lord Shiva, you're full of mercy, Karunamayam. But what is your real blessing? What is the actual blessing that you give? Vrindaranya Rati Pradam. Rati, for worshipping Radha Krishna in Vrindavan. So we should approach a sadhu, a saintly person, whoever is, has the capacity to bless us. We should know what to ask for. Don't ask for some useless thing.
Antavatu palam tesham tadvap yaval medasam devan devaya joyanti mad bhakti yanti mamapi. Krishna says the blessings from the materialistic blessings that people seek from the demigods are all antavat. They come to an end. What is the use of those blessings? Someone who worships me will come and live with me. So we should follow the example of these great personalities. Like Madhavendra Puri also. Because Lord stole for him. He was thinking, I want to taste this Gopinath Kheer. Why? For my sense gratification? No. I want to offer this delicious thing to my Gopal in Vrindavan. But he thought, I'm making a great offense. How can I taste something that's not offered to the Lord? Because to eat food that is prepared for the pleasure of the Lord's senses and take it for one's own senses without offering it is a very heavy offense. So he thought, I'm simply an offender. I'll leave this place. But Krishna is the Supreme. Parameshwar Ishvara Sarvabhutanam Hridesha Janatishtiti. He's in our heart. He knows every thought, every breath, every wish, every motion of our body. So what did he do? He stole kheer from Madhavendra Puri. It's this amazing reciprocation that the bhakta can enjoy in relationship with the Supreme Lord. In the material world, the more powerful a person becomes, the more difficult it becomes to have their association. Can you walk into Mr. Narendra Modi's office and say, hey, you and me, masala dosa, let's go? The security officers will probably shoot you. You can't approach him. He's a very powerful, pious man. Security officer शायद आपको गोली से उड़ा दे, आप उनको approach भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं. But what is his power compared to the power of God? परंतु उनकी शक्ति का भगवान की शक्ति से क्या तुलना? But Krishna makes himself so available that he steals for his devotee. भगवान कृष्ण अपने आप को इतना सरलता से उपलब्ध कराते हैं और अपने भक्त के लिए चोरी भी करते हैं. In reciprocation of devotees' loving emotion. So Madhavendra Puri left that place, but Gopinath woke up the Pujari and said, I've kept one pot of kheer for my devotee Madhavendra Puri, you please take it to him. And when Madhavendra Puri understood the situation, he simply left that place, feeling that when the masses of people come to know this event, they'll simply flock to me with praise. तो Madhavendra Puri को जब वो प्याला प्राप्त हुआ और उन्हें पूरी परिस्थिति का पता चला, तो तुरंत उन्होंने स्थान छोड़ दिया कि उन्हें डर था कि अब लोगों के झुंड मेरे पास आएंगे और मेरी बहुत वाहवाही करेंगे. Because a devotee is humble. क्योंकि भक्त विनम्र होता है. Not advertising, yes, Gopinath has stolen from me. Come, do dandavat. वो अपना इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है कि देखो गोपीनाथ ने मेरे खीर चुराई है, मेरे को आओ दंडवत प्रणाम करो. This is the ornament. One of the ornaments of a devotee is humility.
And this attracts the attention of the Supreme Lord. Because humility means acknowledging how tiny and insignificant we actually are. There was a devotee in our Los Angeles temple who had the service of temple commander. And he would ruthlessly command the devotees. You know, take this broom, do it now, come on. So they were complaining to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada pointed out to him a few things. He said there are billions of universes in the creation of God. And within each universe there's unlimited planets. On this tiny little speck of an earth planet, there are many, many countries. That America is only one country amongst them all. And this country, United States of America, has many millions of cities also. In Los Angeles, there's only one city amongst all those cities. And in Los Angeles, there's many hundreds of thousands of buildings. And you're standing in one of them, and you think you're very, very important. This is our situation. The soul is 1/10,000th the size of a tip of a hair. But due to the rascal mind, we like this when someone praises us, when we get some position, oh, you're very great, or we like to boss people around. We have big ego. But how big are we actually? 1/10,000th the size of a tip of a hair. And aside from that, we're simply been cast into an ocean of modes of material nature, washed here and there by the influence of matter. We're most unfortunate. But still we expect to be respected by other people. So if we understand these facts of life, we become humble, and humility attracts Krishna. And we can hope some lifetime or other to develop a loving relationship with Him. Because we've had many lifetimes in the past, and there may be more in the future. Lord Chaitanya prayed, Mama Janmani Janmani Janmanishware Bhavatad Bhaktir Haituki Tvaye. I don't even want liberation, I simply want your service, your Haituki Bhakti, birth after birth. So is it very unusual that a person becomes cognizant of his past life? Not very unusual. Is it very unusual that a person becomes aware of his past life? Not really. Many people have this experience. But the real responsibility of the human form of life is not to remember your last life, but to make this
your last life. So you never are born again. Yajgatvani devartante tadhama paramamama. Go back to Godhead, never come back to this world. Thank you very much for your kind attention. Does anyone have any comment or question? I just had one thing I wanted to say also, since I'm sitting here with all of you, how much I appreciate your association and how much I think of this temple even when I'm away. In the material world, there's always many kinds of problems. And in any institution, we can also expect there'll be problems. There were many problems even when Srila Prabhupada was here. What to speak of after he left? But when I see all of you chanting and dancing, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, I know that ISKCON is in good hands and there's a very brilliant, wonderful future for Chaitanya Mahaprabhu's movement that's resting on your shoulders. And that experience is irreplaceable in my life. I thank you all for that. Thank you very much. Srila Prabhupada ki Jai.